Hello students, welcome to this part 2 of the video, and in this part we are first going to talk about the Kajinsara Lake. देखिए ये जो Kajinsara Lake है, it has been discovered in Nepal. Alright, and it is a newly discovered lake because it has been recently discovered in this week by the mountaineers who were basically visiting this particular place. एंड ये जो लेक है ये नेपाल के मनंग डिस्ट्रिक्ट में फाइंड हुई है. जिस जगह पे ये फाइंड हुई है इट इज़ नॉन एज सिंगर खड़का एरिया. ऑलराइट, ये जो लेक है ये अराउंड 5200 मीटर्स हाइट पे लोकेटेड है, लेकिन अभी भी इसको ऑफिशियली वेरीफाई नहीं किया है. इट इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियल वेरिफिकेशन. वंस इट इज़ ऑफिशियली वेरीफाइड दिस पर्टिकुलर लेक विल बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक. और प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर थिंग इज टू बी टेकन केयर ऑफ इज द डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक. ये जो कजिनसारा लेक है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये अराउंड 1500 मीटर लॉन्ग है और 600 मीटर वाइड है. ऑलराइट, सो दिस डायमेंशंस आर वर्थ नोटिंग. Apart from that, please take care कि even we can say that as of now, जब तक कजिनसारा लेक ऑफिशियली वेरीफाई नहीं होती एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, जो एग्जिस्टिंग लेक है, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक है वो 4919 मीटर हाइट पे तिलिचो लेक है जो नेपाल में लोकेटेड है. So this is the important information from this particular current affair, that is Kajinsara Lake, as it is talking about the existing highest level lake. And apart from that it also talks about कि अगर Kajinsara को notify कर दिया जाता है, officially recognize कर दिया जाता है, it will become the world's highest lake at highest altitude. Now let us take care and look into the Mental Health Care Act 2017. देखिए जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है ये इस वीक न्यूज़ में था क्योंकि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं HL दत्तू साहब, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो एक्ट है इसके अंदर बहुत सारे गैप्स हैं और ये जो गैप्स हैं ये इस एक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं मटेरियलाइज होने से. So we have to look into what is this Mental Health Care Act 2017 because now it has become part of current affairs. देखिए if we talk about the important features of the bill, सबसे पहला important feature है कि इस बिल के अंदर साफ साफ डिस्कस कर रखा है कि what actually is mental illness. ये एक्ट डिफाइन करता है कि mental illness is a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs some of the following functions. Number 1, judgment of the individual, behavior of the individual, capacity of the individual to recognize reality and ability to meet the ordinary demands of life. It does not include conditions of mental retardation. Pardon me. Alright, it does not include conditions of mental retardation because this act does not include at all the conditions of mental retardation. That is, अगर किसी इंसान का mental विकास नहीं हुआ, कोई इंसान differently abled है in mental capabilities, he is not recognized as mentally ill person. Alright, so very important to note. Alright, mentally retarded person is not considered as mentally ill. Apart from that, very important point to note कि ये जो bill है it talks about the right of the persons with mental illness. सबसे पहला जो right है वो है right to confidentiality. That is, if there is somebody who is suffering from any kind of mental illness, he or she has all the right कि वो अपनी confidentiality maintain कर पाए, अपनी privacy maintain कर पाए and should not disclose anything related to his or her mental health, regarding mental health care, regarding the treatment that he or she is undergoing, as well as the physical health care of the individual. Apart from that, another important right of the people with the mental health under this act is that there is a case of free treatment for such person with mental illness who belong to, यहाँ पे एक एडिशन करना पड़ेगा, who belong to BPL family. उनके पास BPL कार्ड हो या ना हो, they have all the right to free treatment under this act. Another important dimension is that the person who is mentally ill, he or she has the right to make advance directive. Advance directive मतलब suppose करिए कि a person is suffering from any kind of disease
that is going to make him or her mentally unsound in near future, that he or she cannot take any particular decision for himself or herself. तो वो एडवांस में ही बता सकते हैं कि उनका आगे फ्यूचर ट्रीटमेंट क्या होगा. ऑलराइट, उनका आगे फ्यूचर ट्रीटमेंट क्या होगा, एज वेल एज दे कैन इन एडवांस टॉक अबाउट कि हु इज गोइंग टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच अ पर्सन हु आउट ऑफ मेंटल इलनेस कैन नॉट मेक अ प्रॉपर जजमेंट. इन दैट सिनेरियो उनके बिहाफ पे कौन जजमेंट देगा, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, ये आप एडवांस में ही बता सकते हैं. पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी आर नोन एज राइट टू एडवांस डायरेक्टिव. ऑलराइट, apart from that, another important thing is to take care that जो government है, they have allowed to set up a central mental health care authority at national level as well as a state mental health authority at the state level. This is very important fact that has to be taken into account. Apart from that, एक बहुत ही important requirement है कि कोई भी mental health institute है दुनिया अपने देश का, या फिर कोई भी mental health practitioner है, उसको इस act के अंतर्गत अपने आप को मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट में फंक्शन कर रहा है तो स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, अगर वो नेशनल लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा है तो नेशनल या सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना उसके लिए मैंडेटरी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इस एक्ट के अंदर एक मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड भी कंस्टिट्यूट किया जा रहा है, वो इज गोइंग टू टेक केयर कि जो भी पर्सन विद मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनके राइट्स प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे. दैट इज अ मेंटल हेल्थ review board has been constituted to protect the rights of the persons and manage advance directives. Very important point to take into consideration. Apart from that, another thing that you should take into consideration is that कि इलेक्ट्रिसिटी वाली जो ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें जो मेंटल हेल्थ पीपल जिनकी मेंटल हेल्थ डिटेरियोरेट होती है उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश की जाती है. सो ऐसा कभी भी अगर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाएगी, वो थेरेपी कभी भी बिना किसी मसल रिलैक्सेंट या बिना एनेस्थीसिया के नहीं दे सकते. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस थेरेपी शेल नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन माइनर्स. माइनर्स हैव बीन प्रोटेक्टेड. माइनर्स को आप इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी नहीं देंगे, दैट इज ऑलरेडी गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. ऑलराइट, अनदर फैक्ट रिगार्डिंग द एक्ट जो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग याद रखना है वो ये है कि जो सुसाइड है, सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है इस एक्ट के अंदर. इस एक्ट के अंतर्गत सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज घोषित कर दिया है. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम योर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी तक इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट को सिर्फ 19 स्टेट्स और यूटीज ने इंप्लीमेंट किया है. सो इट इज नॉट हैविंग पैन इंडिया कवरेज एज ऑफ नाउ. नाउ द करंट स्टेटस ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया को 13,500 साइकेट्रिस्ट की जरूरत है और अभी इंडिया के पास सिर्फ 3,827 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं. और अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करूं तो सिचुएशन और भी खराब है. बेसिकली इंडिया नीड्स अप्रोक्सीमेटली 20,250 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ 898 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर अवेलेबल एंड इट शोज दैट आवर मेंटल हेल्थ इज इन अ पुअर स्टेट. नॉट मेंटल हेल्थ, आवर मेंटल हेल्थ प्रिपेयर्डनेस और आवर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन अ वेरी पुअर स्टेट. सो दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू the Mental Healthcare Act 2017, which is important from your prelims as well as mains point of view. Now let us go and talk about the next important dimension, that is Interstate River Disputes Amendment Bill. So basically what has happened that कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019 को अप्रूव कर दिया है. इस बिल की अगर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो अमेंडमेंट बिल है ये एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी सेटअप करेगा. ये जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है, इट इज़ गोइंग टू लुक इनटू द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इवन बिफोर द डिस्प्यूट विल बी टेकन टू द कोर्ट. ऑलराइट, कोई भी ऐसे स्टेट्स हैं या कोई भी पार्टीज हैं जो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, सो व्हाट दे विल डू इज दे विल इंडीड गो टू द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी उन सारी पार्टीज को एक मंच पे बिठाएगी, उनसे बातें करेगी, चर्चा करेगी कि विदाउट गोइंग टू कोर्ट आप इस पर्टिकुलर ग्रीवियंस का यहीं पे रिड्रेसल कर लो आपस में. और इन सारे काम को फुलफिल करने के लिए जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है उसको 1 साल का टाइम दिया गया है कि आप 1 साल के अंदर अंदर इतना एफर्ट लगाइए कि जो
एजेंसीज हैं या फिर जो भी पार्टी टू डिस्प्यूट हैं वो कोर्ट में न जाएं, और ज़्यादा अगर आपको टाइम लग रहा है तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि इस अमेंडमेंट के तहत जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल्स हैं they will be dissolved, और एक single tribunal with multiple benches will be set up to take care of the interstate water disputes in the country. All right, और जो tribunals हैं they will take up the cases only when the DRC will fail. All right, so this is another important information. Another thing that is related to this particular amendment bill is that जो tribunal है it will consist of a chairperson. इसका एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, एंड नॉट मोर देन 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे दे हैव टू बी आइदर द हाई कोर्ट जजेस और द सुप्रीम कोर्ट जजेस। Alright, so this is another very important information related to interstate river water disputes amendment bill. Alright, then next another important current affair that I want to discuss with you is related to Khadi and Village Industries Commission. Basically Khadi and Village Industries Commission was in news this particular week क्योंकि राजस्थान के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिरोही डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे KVIC ने 50 लेदर किट्स और 350 बी बॉक्सेस विद लाइव बी कॉलोनीज डिस्ट्रीब्यूट करे थे इस 9 अगस्त को, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड ट्राइबल डे। ऑलराइट, नाउ before going ahead and discussing the Khadi and Village Industries Commission, here we are going to discuss about what is World Tribal Day. देखिए जो World Tribal Day है ये हर साल 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को सेंसिटाइज कर सकें अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड्स ट्राइबल पॉपुलेशन। और जो वर्ल्ड्स ट्राइबल पॉपुलेशन है यानी ट्राइबल पॉपुलेशन को कई बार इंडिजिनस पीपल भी बोला जाता है। Alright, now why we recognize 9th August as the World Tribal Day? Because it was the first time when the United Nations in December 1994, it was the first time when in December 1994 United Nations decided to observe World Tribal Day to commemorate the first meeting of the United Nations Working Group on Indigenous Population. Alright, of the Subcommission on Promotion and Protection of Human Rights in 1982. So 1982 में जब पहली मीटिंग हुई थी UN Working Group on Indigenous Populations of the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights, उसकी फर्स्ट मीटिंग को कमोमोरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1994 दिसंबर में डिसाइड किया कि 9 अगस्त को आज के बाद से हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, वर्ल्ड ट्राइबल डे। Alright, now before coming to the conclusion of the part 2, let's discuss about the Khadi and Village Industries Commission. देखिए जो Khadi and Village Industries Commission है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इट हैज बीन पास्ड बाय द और इट हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑलराइट, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और जिस एक्ट के अंतर्गत इसको क्रिएट किया है इट इज नोन एज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। वेरी इंपॉर्टेंट टू note from examination point of view. All right, another thing that you have to take care is that ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है ये सक्सेसर है to a particular body which is known as All India Khadi and Village Industries Board. Alright, UPSC ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, you have to keep this fact in mind कि जो Khadi and Village Industries Commission है it has actually succeeded All India Khadi and Village Industries Board. Alright, now another important fact to remember regarding KVIC, it is the apex body, it is the apex organization under the MSME, that is Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. अगर इसके बेसिकली इंटेंशन की बात करूँ कि what basically is the objective or what basically is the aim of the KVIC, इसका aim है to plan, to promote and facilitate as well as organize and assist in establishment and development of village industries in rural areas. Very important fact. All right, rural areas के ऊपर काफी stress दिया गया है under KVIC. Apart from that, this particular body has 3 very important objectives, and the objectives can be summed under the 3 broad headings: the social objectives, the economic objectives and the wider objective. Social objective मतलब what is the samajik objective of this particular organization, that is it intend to provide employment. It intends to provide employment in rural areas. Very important, it intends to provide employment in rural areas. Apart from that, अगर मैं इसके
ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये ऐसे आर्टिफैक्ट्स एंड आर्टिकल्स प्रोड्यूस करवाना चाहती है रूरल एरिया से जिनकी मार्केट में सेल हो सके, और इसको बेचने से जो बेनिफिट होगा, इसको बेचने से जो इनकम अर्न होगी, it will be reinvested in the welfare of the indigenous and the tribal population. And the last is the wider objective. The wider objective of this body, that is the Khadi and Village Industries Commission, is creating of self-reliance among the people and also building rural strong community spirit. Yani basically it want to convert the entire rural community into a integrated and a solidarity based organization or a community which is having good inter community linkages. All right, so this is the wider objective. The B point is the economic objective and A point is the social objective. Alright, so this is all important information that is required about the KVIC, that is Khadi and Village Industries Commission, from your prelims point of view as well as from your mains point of view. Alright, so this is the end of the part 2 of the current affairs video for this particular week. That's all from my side. Thank you very much. Have a great day ahead. Take care. Bye.